Hello guys, welcome back to my channel. This is me Rajeshwari and I welcome you all back to my channel. I hope everybody is safe and sound. So in today's video, as you have read in the thumbnail, I am going to review a product which is all over the internet. This is the Skin1004 Madagascar Centella Ampoule. Okay, this is all over the internet. This is a very viral Korean product alongside the Cosrx Snell Mucin. Whenever I refresh your page, I see everyone using this and blabbering so much about this product. So I thought of buying it and I've used almost the 90% of the product. Just 10% of it is left, and here I am with the review. So is this product worth the hype? I think you should watch this video before you purchase this product, so that you don't have any confusion in your head and you don't and if you want to, you can spend the money, because this is very much overpriced and a costly product. So first you should watch this video and then you should decide for yourself. So without any further delay, let's begin with the video. ओके सो गाइज देयर वर अ लॉट ऑफ नॉइजेस, क्योंकि मैं अपने मायके में हूँ एंड यहाँ पे मेरा जो घर है वो बिल्कुल एकदम मेन रोड के बगल में ही है. तो ऑब्वियसली यू गेट टू हियर सो मच ऑफ नॉइजेस. स्टिल मैंने सब दरवाजा बंद करके मैंने एसी ऑन कर दिया है. आई होप देयर विल बी मच लेसर नॉइज दैन बिफोर. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज द प्रोडक्ट. ओके, सो ये प्रोडक्ट जब मैंने देखा कि सब इन्फ्लुएंसर्स खरीद रहे, सब ट्राई कर रहे, फर्स्टली इसका पैकेजिंग मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि बहुत ही क्लासी पैकेजिंग था इसका. एंड इतना ज़्यादा सुना मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में, लाइक एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट एंड बाइंग. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी खरीद लूँ, बट इसको खरीदने में मेरा जेब आधा हो गया. बिकॉज वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज दिस प्रोडक्ट, दिस इज द 100 ml ऑफ द प्रोडक्ट. ओके, द 100 ml cost something around 2299 to be very approx. The retail price obviously will get like discount, but ये प्रोडक्ट में ज़्यादा डिस्काउंट नहीं रहता है, बहुत ही कम डिस्काउंट रहता है, like 10 to 20%. ओके, आई गॉट दिस फ्रॉम टीरा ब्यूटी एंड मैंने ये प्रोडक्ट लिया. आई वॉज लाइक एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम दिस प्रोडक्ट की कॉसरेक्स स्नेल म्यूसिन, जो कि मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है एंड उसके जैसा ही काम करेगा एंड बहुत ही ज्यादा डिफरेंस दिखेगा. दिखा कि नहीं दिखा वो मैं बताती हूँ. पहले मैं द प्राइस आई हैव टोल्ड यू, इट्स 2300. ओके, नाउ दिस कंटेन्स 100% सेंटेला एशियाटिका. सेंटेला एशियाटिका ऑल्सो नोन एज सिका, विच हेल्प्स इन द रिपेयरिंग ऑफ द स्किन विद द स्किन बैरियर एंड काम्स डाउन इरिटेटेड सेंसिटिव काइंड ऑफ स्किन. एंड सिका का बहुत ज्यादा पिंपल्स, एक्ने प्रोन स्किन के ऊपर बहुत ही ज्यादा काम करता है, क्योंकि सिका का मैंने फेस वॉश एंड दूसरा प्रोडक्ट भी यूज किया है. बट दिस प्रोडक्ट क्लेम्स दैट इट हैज 100% सेंटेला एशियाटिका इन इट, जो कि कोरियन प्रोडक्ट्स का एक मेन इंग्रेडिएंट भी होता है. बहुत सारे कोरियन प्रोडक्ट्स में यू गेट टू सी सिका, विच इज अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट आई विल से. तो उसको देखते हुए मैंने लिया था, जबकि मेरा स्किन उतना भी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, बट यू नो इंस्टाग्राम एंड reels वगैरह made me buy this product, so I opted for this product. Now without any further blabbering, let me show you the consistency of this product. Okay, wait, it's very watery. It's very watery, like पूरा पानी के तरह, and ये absorb हो जाता है quickly into your skin. Let me apply you and show you. अभी मैंने कुछ मेकअप अप्लाई नहीं किया है, जस्ट मेरा स्किन केयर है एंड लिपस्टिक. ओके, मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ अपने स्किन पे. So this product gets quickly absorbed into the skin. Okay, it's very watery like formula, not for my dry skin girlies out there. आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है. Oily skin people, you can definitely go for this. Okay, combination people can also try this, but not for dry skin girlies. Okay, मैंने यहाँ पे सब points वगैरह jot down किया है. That's why I'm looking down there. Don't think ये क्यों बार बार नीचे देख रही है. So gets easily absorbed into the skin. Oily people can use this, like it will work as a magic for them. उनको कुछ ड्राई और वाटरी फॉर्मूला में चाहिए होता है, बट क्या ये उतना कुछ बढ़िया रिजल्ट देता है? नो, आई विल से नो, बिकॉज मैंने कुछ ड्रास्टिक ऐसा चेंज नहीं देखा है. अब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद स्किन, मुझे ऐसा लगता है, आई एम अ कॉम्बिनेशन गर्ल, सो इसको अप्लाई करने के बाद मुझे और भी कुछ अप्लाई करना पड़ता है. ऑब्वियसली दिस इज अ एम्प्यूल, दिस इज समथिंग बिटवीन, लेट मी टेल यू व्हाट इज एम्प्यूल इज. एम्प्यूल इज समवेयर बिटवीन a toner and a serum. Okay, so obviously the formula has to be between both of them, so I'm not complaining about that. Last year मैंने इसको लिया था and still I'm using this.
वाई, बिकॉज मुझे इससे ज़्यादा कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखा, एक नॉट अ ड्रास्टिक चेंज। जब मेरे स्किन में थोड़ा बहुत एक्ने होता है, इरिटेट फील होता है, सेंसिटिव होता है, लाइक आफ्टर मेकअप मुझे लगता है आज मैंने ट्रैवल किया, जर्नी किया, मुझे कुछ अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे स्किन इरिटेटेड सा हो रहा है। एंड स्पेशली आफ्टर शेविंग माई फेस, लाइक आफ्टर आई शेव आई यूज दिस बिकॉज एक्नेस के लिए एंड रेडनेस के लिए, इरिटेटेड स्किन के लिए, जब इचीनेस होता है उसके लिए बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। बट इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक अ सीरम की आपको पूरा एकदम ग्लोइंग बना देगा एंड कुछ और भी काम करेगा, सो दिस सीरम इज नॉट फॉर यू, दिस एम्प्यूल इज नॉट फॉर यू देन. Okay, so as I said, the formula is very watery, it gets easily absorbed into the skin, but you will not see a drastic change, but like a little bit of moisturization, that's all you will get. And दिस कैन बी फॉर, मेरे लिए काम नहीं किया, कैन वर्क फॉर यू, बट आई कैन से दिस कि जिनको ऐसे रेडनेस, बम्पी स्किन होता है, पूरा फेस में पिंपल्स वगैरह है एंड फेस शेव ऑफ करते, उसके बाद आप ये यूज कर सकते. बट फॉर द प्राइस लाइक 2300 rupees, I don't think this product is worth the hype or worth the price that I'm paying, because if I'm paying such a price for this product I will expect more. तो इससे बेहतर तो 1500-1400 में आपका कॉस्मेटिक्स स्नेल म्यूसिन आता है, वो इससे ज्यादा बढ़िया वर्क करता है. सो वाई वुड आई परचेज दिस इंस्टेड ऑफ दैट वन. सो आई थिंक उतना भी ज्यादा काम नहीं किया है. आई थिंक दिस इज ओवर प्राइस्ड एंड ओवर हाइप्ड, टू मच ओवर रेटेड एंड नॉट worth the hype for me. I don't know if this works for you or not, but मेरे लिए उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं किया है, because I'm still struggling. It has been 1 year and I'm still struggling to finish this product. I just use it after the shave and all that, on those days when you get those acne and all. So that was all I had to say about this product, because ये कुछ खराब नहीं किया है मेरे स्किन के लिए. इट विल नॉट हार्म योर स्किन इन एनी वे, और कुछ खराब रिजल्ट्स नहीं देगा कि रैशेस दे देगा, बम्स दे देगा. नो, बिकॉज इट हैज सिका. ऑब्वियसली सिका इज अ गुड इंग्रेडिएंट, बट इट विल नॉट शो सच. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक फॉर द प्राइस, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग लाइक अ ड्रास्टिक change and result or glowing and that kind of skin, it will not give you that. It's just a simple basic product. You can layer this. That's all I have to say about this product. I hope you liked this video, and if this video was helpful for you, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel, because you people are watching and not subscribing or liking the video. So make sure you like, share and also subscribe to my channel, so that I get that encouragement to make more such videos and review videos basically. And आप comments में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा दूसरा product के बारे में review चाहिए. So see you in my next